नमस्कार दोस्तों। अगर आप लोग यूजीसी नेट इंग्लिश सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि वर्क्स और राइटर्स पर हर बार सवाल आता है। राइटर्स के बर्थ ईयर को उनके सीक्वेंस में लगाना होता है और वर्क्स के पब्लिकेशन ईयर्स को सीक्वेंस में लगाना होता है। कम से कम इस तरह से 10 या 15 क्वेश्चन तो हर बार आते ही आते हैं। इसके लिए बहुत ही अच्छी बुक मुझे लगी उपकार की, जो कि डॉक्टर बी जैन साहब की है। तो यहाँ से उस चीज़ को हम बहुत ही जल्दी कवर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सभी राइटर्स एक साथ, हर एक एज के सभी राइटर्स एक साथ लिखे हुए हैं, उनका टाइम पीरियड लिखा हुआ है, बट वर्क्स का पब्लिकेशन ईयर नहीं लिखा हुआ है। तो उसे आप मेहनत कर सकते हैं, उसको बगल में पेंसिल से लिख सकते हैं इस बुक को लेने के बाद, जो आपका बहुत हेल्प करेगा। तो आज मैं आपको ये बुक दिखाने वाला हूँ कि किस तरह का ये बुक है, और ये बहुत सस्ती बुक है, लगभग 160 की है शायद। तो बड़े आराम से आप इसको ले सकते हैं, फिर आपकी ये बहुत हेल्प करेगी। सो लेट्स सी हाउ दिस बुक लुक्स लाइक। ये देखिए, फॉर पीजीटी, टीजीटी, यूजीसी नेट सेट, पीजी एंड पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट। अभी आपको दिखाने वाला हूँ कि इसमें क्या क्या है कंटेंट में। देखिए, ये द लिटरेरी एजेस, एज ऑफ चौसर, मेजर अथर्स एंड देयर वर्क्स, एलिजाबेथन एज, मेजर अथर्स एंड देयर वर्क्स, कैरोलिन एज, अगस्टन एज, रोमांटिक एज, विक्टोरियन एज, मॉडर्न एज, फिर इधर लिटरेरी स्कूल्स एंड मूवमेंट्स, सारे लिटरेरी स्कूल एंड मूवमेंट दिए हुए हैं। द रिनेसां रिफॉर्मेशन, यूनिवर्सिटी बिट्स, मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्स, ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्स, न्यू क्लासिकल, अगस्टन स्कूल ऑफ पोएट्री। तो these are the literary schools and movements from where questions are asked again and again. So if you have command over these areas, you can easily solve 10 to 15 questions very easily. Okay. Now, poetry and its major forms: epic, mock epic, sonnet, ode, lyric, pastorals, elegies, ballad, satire. And after uh, these things, you will find multiple choice questions that are very important question. I have seen and I have qualified it, so I know the importance of these questions. Drama and its major forms: morality, miracle, mystery plays and interludes, the tragedies, melodrama, tragic comedies, romantic comedies, comedies of humor. So all these things you will find in this book. Look here: prose and its major forms, novel and its major forms, literary theories and major schools of criticism. Okay, some major authors and multiple choice questions on them, like Chaucer, William Shakespeare, Edmund Spenser, John Milton, John Dryden. You will find British authors as well as American, Indian author in this book. This book is very brief and very concise, so you will not find all the authors of the world, but you will find authors of British literature, Indian literature and American literature. You can see here, and figure of speech, rhetoric and proceeding. So these kinds of things have been included in this book. You can go through it, and here starts with the age of Chaucer. Age of Chaucer, Elizabethan age, Caroline and Restoration age, the Augustan age, Romantic age. You will find all the ages of English, British literature. Look, the author and their works. The author and the period of their life span is given here, but you will not find the publication year of the works. So this you will have to do on behalf of yours, because this is the shortcoming of this book, that they have not given the publication year. If they have given it,
it would be better. So here you can see, today I am going to solve 50 questions of this book, and in next my coming videos I will be taking one and another age sequence in sequence, where we will solve the question and read the writer and their works. We will also write the publication of the works. Okay, so I am going to solve 50 questions of this book in this video, but later I will go through ages. So yes, these are the multiple choice questions which I will be covering. So these are the questions, very important questions, which are asked again and again in examinations. So we will be covering this. During the reign of which monarchs did Chaucer live? मतलब किन मोनार्क्स के समय में चौसर रहे थे? तो चौसर 3 राजाओं के शासनकाल में रहे, एडवर्ड थर्ड, रिचर्ड सेकंड एंड हेनरी फोर्थ। तो ये 3 मोनार्क्स हैं जिनके समय में चौसर रहे, एडवर्ड थर्ड, रिचर्ड सेकंड एंड हेनरी फोर्थ। Second question is, during which sets of dates did Chaucer live? Means, what is the life span of Chaucer? So we know that Chaucer was born in 1340 and died in 1400, and this period is known as the age of Chaucer. Next, the 100 Years War began in the, we know that 100 Years War began in 1337. So the time period from 1300 to 1400 is known as 14th century. The 100 Years War began in 14th century. Okay, so the answer of this question will be D. Next, in which country did Norman conquest take place? In which century, sorry, in which century did Norman conquest take place? तो Norman conquest we know that 1066, Norman conquest 1066 में हुआ था, तो इस तरह से ये 11th century में हुआ, 11th century, and Black Death is the name given to, Black Death किस चीज को नाम दिया गया था? ब्लैक डेथ क्या थी? तो द एपिडेमिक ऑफ प्लेग दैट अकर्ड इन चौसर्स एज। एपिडेमिक एक महामारी थी, उसी को, एक होता है पैंडेमिक और एक होता है एपिडेमिक। तो जो पैंडेमिक जो होता है वो पूरे वर्ल्ड में फैला होता है, जैसे कि आपका कोरोना, दैट वाज पैंडेमिक। बट when any disease is spread in a particular area, particular region, then it is known as epidemic. So the Black Death is the epidemic of plague that occurred in Chaucer's age. So the correct option of this question is B, the epidemic of plague that occurred in Chaucer's age. Okay, now the War of Roses figures in the works of, the War of Roses figures in the works of, so the War of Roses figures in the works of Shakespeare, William Shakespeare, 1564 to 1616 लाइफ पीरियड है इनका। The 100 Years War was fought between, we know that 100 Years War started in 1337 and ended in 1452, but the 100 Years War was fought between, किनके बीच में लड़ा गया? किनके बीच में लड़ा गया? तो it was
फॉट बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस। इंग्लैंड एंड फ्रांस के बीच ये लड़ा गया था 100 ईयर्स वार। तो 100 ईयर्स वार कब स्टार्ट हुआ? 1337 में। कब एंड हुआ? 1452 में। किसके बीच लड़ा गया? इंग्लैंड एंड फ्रांस के बीच में लड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार्डमोन एंड साइनउल्फ वर टू फेमस पोएट्स। दे वर, क्वेश्चन नंबर 8, they were Chaucer's predecessors. Chaucer's predecessor, predecessor and successor, टू वर्ड होता है। तो predecessor का मतलब होता है जो किसी के पहले, और successor का मतलब होता है जो उसके बाद में आए। तो कार्डमोन एंड साइनवुल्फ वर टू फेमस पोएट्स, दे वर predecessor ऑफ चौसर। predecessor ऑफ चौसर का मतलब कि वो चौसर से पहले हुए। Chaucer's predecessors, Cardamom and Sainte-Beuve. Now, the War of Roses was fought between the House of York and the House of Lancaster. The House of York and the House of Lancaster. So, the correct answer of this question is option A, the House of York and the House of Lancaster. Next, in which year was the Globe Theatre built? Globe Theatre is very important. It was related with William Shakespeare, so it became very famous. तो ये बनाया कब गया, कब बना था? 1599 में। In which year was the Globe Theatre built? 1599 में ग्लोब थिएटर बना था। क्वीन एलिजाबेथ असेंडेड द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड इन। क्वीन एलिजाबेथ इंग्लैंड की सिंहासन पर कब आसीन हुई? असेंडेड मतलब गद्दी पर वो कब बैठी? तो हम जानते हैं कि वो 1558 में सिंहासन पर बैठी, यानी रानी बनी। तो एलिजाबेथन एज यहीं से स्टार्ट होता है। एलिजाबेथन एज स्टार्ट्स फ्रॉम 1558 and ends in 1603. तो 1558 to 1603 is known as age of Elizabeth. Next, the Jacobean age. The Jacobean age covers the period. The Jacobean age covers the period. तो 1558 to 1603 एलिजाबेथन एज, 1603 to 1625 ये माना जाता है जैकोबियन एज। 1603 to 1625 ये जैकोबियन एज है। नेक्स्ट, इसके बाद जो एज आता है उसे हम कहते हैं कैरोलिन एज। द कैरोलिन एज कवर्स दिस पीरियड 1625 to 1649। डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो 1625 to 1649 ये कैरोलिन एज है। तो आपने अभी क्या देखा? एलिजाबेथन एज 1558 to 1603, फिर आपने पढ़ा जैकोबियन एज 1603 to 1625, फिर आपने पढ़ा कैरोलिन एज 1625 to 1649। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 14। द कॉमनवेल्थ regime अंडर क्रोमवेल कवर्स द पीरियड फ्रॉम। कॉमनवेल्थ पीरियड हम जानते हैं कि कैरोलिन एज के बाद कॉमनवेल्थ पीरियड स्टार्ट हो जाता है, जो क्रोमवेल का शासन काल है। तो 1649 to 1660 तक का जो टाइम पीरियड है, दिस इज नोन एज कॉमनवेल्थ पीरियड और कॉमनवेल्थ regime under Cromwell. So correct answer of this question is D. Now Charles II was restored to the throne of England in। चार्ल्स सेकेंड फिर से उन्हें इंग्लैंड की गद्दी पर बैठाया जाता है। कब बैठाया जाता है? 1660। So correct answer of this question is 1660। यहीं से स्टार्ट हो जाता है restoration period। Now चार्ल्स फर्स्ट was executed in। चार्ल्स फर्स्ट को कब एग्जीक्यूट किया गया?
तो he was executed in 1649. Charles I was executed in 1649. Whose age is called the Jacobean age? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि 1603 to 1625 इज नोन एज द जैकोबियन एज, लेकिन ये किसका एज था, किसके नाम पर जैकोबियन एज पड़ा? तो द एज ऑफ जेम्स फर्स्ट, द एज ऑफ जेम्स फर्स्ट इज नोन एज जैकोबियन एज, द एज ऑफ जेम्स फर्स्ट। ओके, जैकोबियन एज कब से कब तक है? 1603 to 1625। हुज एज इज कॉल्ड कैरोलिन एज, कैरोलिन एज जहाँ जैकोबियन एज खत्म होता है वहीं से कैरोलिन एज शुरू होता है। कैरोलिन एज इज फ्रॉम 1625 to 1649। तो कैरोलिन एज किसके नाम पर पड़ा? क्वेश्चन नंबर 18, द एज ऑफ चार्ल्स फर्स्ट, द एज ऑफ चार्ल्स फर्स्ट, एज ऑफ चार्ल्स फर्स्ट। तो कैरोलिन एज चार्ल्स फर्स्ट के टाइम पीरियड को कहा जाता है, ठीक है। उसके जो रिजाइन पीरियड था, उसका जो शासन काल था, उसको कहा जाता है कैरोलिन एज, चार्ल्स फर्स्ट, एंड ही वाज एग्जीक्यूटेड इन 1649। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, हु हेडेड द कॉमनवेल्थ रिजाइन आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट? हु हेडेड द कॉमनवेल्थ रिजाइन? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कॉमनवेल्थ पीरियड जो था वो किसके अंडर में शासन चल रहा था? तो वो क्रॉमवेल थे, क्रॉमवेल। तो 19, क्वेश्चन 19, हु हेडेड द कॉमनवेल्थ रिजाइन आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट? ही वाज क्रॉमवेल, ही वाज क्रॉमवेल। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 20, हु वाज अपॉइंटेड द लैटिन सेक्रेटरी ड्यूरिंग द प्यूरिटन गवर्नमेंट? क्वेश्चन नंबर 20, तो इट वाज मिल्टन, इट वाज मिल्टन हु वाज अपॉइंटेड द लैटिन सेक्रेटरी ड्यूरिंग द प्यूरिटन गवर्नमेंट, जॉन मिल्टन, 1608 to 1674। नेक्स्ट, द एज ऑफ रिस्टोरेशन, क्वेश्चन नंबर 21, द एज ऑफ restoration is so called because the following king was restored to the throne. The age of restoration is so called because the following king was restored to the throne. अभी हमने बताया कि कौन किंग था जिसको फिर से गद्दी पर बैठाया गया था, इसीलिए 1660 में, इसीलिए यहीं से रिस्टोरेशन एज शुरू होता है। तो कौन थे? वो थे आपके चार्ल्स सेकेंड, चार्ल्स सेकेंड। ओके, नेक्स्ट, द थिएटर वर क्लोज्ड डाउन ड्यूरिंग द कॉमनवेल्थ रिजाइम। कॉमनवेल्थ रिजाइम कब से कब तक है? 1649 to 1660। किसके अंडर में शासन चल रहा है? क्रॉमवेल के। तो द थिएटर्स वर क्लोज्ड डाउन ड्यूरिंग द कॉमनवेल्थ रिजाइम इन इंग्लैंड इन विच दे वर रीओपेंड। इन विच ईयर वर दे रीओपेंड? वो कब उनको फिर से रीओपन किया गया? तो 1660 में उन्हें फिर से रीओपन कर दिया गया था, 1660 में। ओके, नेक्स्ट, द रीस्टोरेशन मार्क्स द रियल मोमेंट ऑफ बर्थ ऑफ आवर मॉडर्न इंग्लिश प्रोज। हु मेक्स दिस ऑब्जर्वेशन? ऑब्जर्वेशन मीन्स कमेंट। द रीस्टोरेशन मार्क्स द रियल मोमेंट of birth of our modern English prose. Who makes this observation? Question number 23. So it was Matthew Arnold. Matthew Arnold, 1822 to 1888. It was Matthew Arnold. And 1631 to 1700, John Dryden, Ben Jonson, and Addison. These are very important writers. So if you will speak the lifespan period with the name of the writer, it will be very beneficial to memorize it. 24, the term Augustine was first applied to a school of poets by term Augustine. This term Augustine was first applied to a school of poets by means who used Augustine.
It was Dr. Johnson, 1709 to 1784. Dr. Johnson, 1709 to 1784. Next, Dryden, 1631 to 1700, and Pope, Alexander Pope, 1688 to 1744, and Matthew Arnold, 1822 to 1888. I am speaking the lifespan of the writers along with their names. Question 25. The 18th century in English literature is also called. 18th century in English literature is also called the age of Puritanism, the age of reason, the age of sentimentalism, the age of excessive passion. So, the age of reason. Age of reason. Okay. So, the 18th century in English literature is also called the age of reason. Next, who called the 18th century our admirable and indispensable 18th century? 26. It was Matthew Arnold.